अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग लशपेश होंगे। वेलकम टू ट्रूडेक्स। आज हम लोग आपके साथ इंडिया के डेवलपमेंट के हवाले से वीडियो देखने लगे। आज हम देखेंगे आपके साथ, आप जानते हैं इस बात को कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो फिलहाल अभी $4 ट्रिलियन के आसपास है। अभी हुई नहीं है 4 ट्रिलियन की, लेकिन इंडिया का पहला टारगेट है किस तरह इसको $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाया जाए। और फिर इसके बाद आज हम आपके साथ ये जानेंगे कि कैसे भारत $50 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक पहुंच सकता है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, जो कि डबल द इकोनॉमी ऑफ यूएसए है। कि अमेरिका की, तू अपनी बीच में कर ले, अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसकी डबल इकोनॉमी के बराबर है $50 ट्रिलियन। देखेंगे आगे कितनी पाकिस्तान की है, कुछ 300 कुछ 350 के आसपास 350 बिलियन, और इंडिया की 3.4 कुछ है, 3 एग्जैक्ट मुझे फिगर नहीं याद, लेकिन 3.5 के आसपास है ट्रिलियन डॉलर, जो कि बनती है 3500 कुछ बिलियन डॉलर। भाई साहब, और पाकिस्तान की भी 1000 भी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तो देखेंगे आपके साथ मिलकर। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप इनको सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। वीडियो फिर हम करते हैं। A recent article from Goldman Sachs stated that India is expected to reach a GDP of $52 trillion in the next 50 years, surpassing the United States of America and becoming the world's largest economy. Additionally, at India's current rate of GDP growth, it is projected to become the world's third largest economy within the next 3 to 4 years. In today's video, we'll explore the key factors that will propel India towards becoming a $50 trillion economy. Additionally, we'll delve into the potential challenges that could hinder this growth trajectory. India stands as the world's fastest growing economy, surpassing expectations set by the IMF and World Bank in 2023, with a remarkable growth rate of 7.2%. This impressive economic expansion occurred during a period of time when many countries, like Germany, were basically in a recession due to the energy crisis caused by the Russia-Ukraine war. The reason for this lies in India's unique position within the global geopolitical landscape and its foreign policy. Dr. Jai Shankar, India's foreign minister, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, has crafted a foreign policy that is nothing short of masterful. India has chosen the path of non-alignment, utilizing its historic ties with Russia to secure oil at discounted rates, and leveraging its status as the world's most populous democracy to gain support from the USA. You might wonder why both Russia and the USA are keen to maintain these relationships. The answer is India's strategic importance to both nations. Russia relies heavily on India's purchases of oil and weaponry to sustain its economy. In 2022, India imported goods worth $40 billion from Russia, a figure that has likely exceeded $50 billion this year. The USA also depends on India, especially in potential conflicts with China. India's strategic location makes it a valuable ally for the USA. Additionally, India possesses the world's fourth largest military, which could be crucial in any conflict involving China's southwestern border. Due to this, India was able to maintain high growth even during a period of economic shutdown. Now, let's discuss why India is poised to become a $50 trillion economy. But before we do that, if you enjoy such content and would like to watch more, please consider dropping a like and subscribing. It really helps us out in the YouTube algorithm. Now, back to the video. The primary reason, as you may have guessed, is its young workforce. India boasts the largest youth population in the world. Approximately 66% of its total population, over 808 million people, is below the age of 35. Nearly 40% of the Indian population falls within the 13 to 35 age bracket. In fact, India has more people under 35 than the entire population of the United States. This demographic is expected to be the main catalyst for India's economy. In contrast, countries like China, Japan, South Korea, and Italy are facing rapidly aging populations with declining numbers each year. For example, Japan's population decreased by nearly 800,000 in 2022. A shrinking global population could potentially lead to a contraction in the world economy. Conversely, an increasing population tends to drive economic growth. India's population is projected to continue growing until around 2064, suggesting that India will be a significant driver of global economic growth until then. Another reason for India's growth is its India Stack. India Stack is a set of digital infrastructure components that collectively enable various entities, including governments, businesses, and individuals, to interact and conduct transactions electronically.
India's small businesses have traditionally struggled to get formal loans. Before the COVID-19 pandemic, about 92% of them couldn't access formal credit. The micro, small, and medium enterprises, MSMEs, in India face a huge credit shortage, estimated to be between $250 billion and $300 billion. This gap exists because most available credit goes to larger companies with physical assets, leaving MSMEs and individuals without collateral struggling to get loans. The introduction of the account aggregator system in India could change this situation. It aims to make it easier for businesses and individuals with limited financial history or no physical collateral to access loans from formal financial institutions. The AA system is part of the India Stack, a set of digital tools for identity verification, payments, and data management, developed through public-private collaboration. The first part of India Stack is Aadhaar, a digital identity system that has helped millions of Indians, especially in rural areas, to access government and banking services. The second part, the Unified Payments Interface, or UPI, has transformed the way payments are made in India, making them instant and easy, especially through mobile phones. The third part, focusing on data management, introduces account aggregators. These are entities that help manage and share financial data securely with the user's consent. This system can help small businesses and individuals by using their digital transaction history as a form of credibility to secure loans, making the loan process cheaper and faster. This digital transformation, especially with Aadhaar, UPI, and now AAs, is important for small and medium businesses in India, which contribute significantly to the economy and employment. The AA system could be a major step forward, bringing more small businesses and individuals into the formal financial system and boosting the growth of these businesses. In fact, the volume of digital transactions in India surpasses the combined total of the US, China, and Europe, all of which are significantly more developed than India. This highlights the sophistication of the India Stack. This development could potentially position the UPI system as a future alternative to the SWIFT money transfer system. SWIFT has been a key tool for the USA in maintaining its global influence, often used to isolate countries that oppose its policies. The rise of UPI could therefore pose a challenge to the USA. In fact, this shift has already begun. Google and India have formed a partnership to globalize UPI. This collaboration aims to assist other countries in developing digital payment systems, akin to India's UPI, and to utilize UPI for cross-border money transfers, thereby simplifying these transactions and reducing dependence on conventional methods. This initiative is part of UPI's continuous international expansion. It has already been introduced to Singapore, France, Sri Lanka, and the UAE. Prime Minister Narendra Modi launched UPI in France, enabling Indian tourists to conduct payments in Indian currency. Furthermore, discussions are in progress to introduce UPI in New Zealand. The third reason why India might become the world's largest economy is, surprisingly, due to China. Indeed, China's recent actions are inadvertently contributing to India's success. China's practices of creating debt traps for other countries, its aggressive stance on Taiwan, and territorial encroachments have led to a significant loss in trust by major companies and countries. As a result, many businesses are adopting a China plus one strategy, shifting their manufacturing to alternative countries, with India emerging as a primary beneficiary. Major global companies like Apple and Tesla have started moving their operations to India. Apple, for instance, has begun manufacturing the iPhone 15 in India. This shift has not only created numerous job opportunities, but also attracted foreign capital investments into India. Consequently, this influx has propelled India's stock market to become the fourth largest in the world, surpassing Hong Kong. The fourth reason why India will become the world's third largest country is its infrastructure push. A key example of this infrastructural development is the transformation of Ayodhya, a city in India. In December of the previous year, Modi inaugurated a new airport and a revamped railway station in the city, with over $2.2 billion earmarked for development projects in Uttar Pradesh, a state in India, including $1.7 billion specifically for Ayodhya. This development is part of a broader trend of nationwide infrastructural growth, moving away from the red tapeism and policy paralysis that previously hindered India.
This year, several major infrastructure projects are set for inauguration, including the world's highest rail bridge in Jammu and Kashmir, the Mumbai Trans-Harbour Link, sections of the Delhi-Mumbai Expressway, and Dwarka Expressway in Delhi, and the Agra Metro. Other significant projects nearing completion are the Navi Mumbai International Airport, Noida Airport, Mumbai Metro Network's Aqua Line 3, and the Mumbai Coastal Road. India's road revolution has been remarkable, with the country now boasting the world's second largest road network, surpassing even China. The total length of national highways has seen a 59% increase since 2014. The target for this year is to build 13,800 kilometers of highways, the highest ever set in the country. The railways and aviation sectors are also undergoing significant upgrades. Investment in railways has increased, and the electrification of tracks is nearing completion. The Vande Bharat and Amrit Bharat trains symbolize the transformation of the Indian railways. Additionally, the metro rail network is expanding rapidly across the country. In aviation, India has witnessed the opening of new airports and terminals, with the total number of operational airports reaching 150 and the target to increase this to 220 by 2025. India's aviation market is the fastest growing in the world, with major aircraft orders placed by Air India and Indigo. The government plans to invest $2 trillion in infrastructure between 2024 and 2030, doubling the investment of the past 7 years. This is part of Modi's goal to make India a developed nation by 2047. With massive state spending on infrastructure and a rise in housing demand, the construction sector is booming and is expected to add up to 30 million jobs by 2030. As these infrastructure projects progress and even more ambitious ones are undertaken, India is poised to shed its previous reputation and emerge as a nation that successfully drives development, complementing its rising economic stature. By 2027, India is expected to become the world's third largest economy, with its infrastructure reflecting this economic ascent. In conclusion, India is poised to become a $30 trillion economy, supported by 4 foundational pillars. Firstly, its youthful population, with a majority under the age of 35, is set to provide a dynamic and robust workforce. Secondly, the India Stack, including digital initiatives like Aadhaar and UPI, is transforming financial accessibility, especially for small businesses and individuals. Thirdly, the global shift in manufacturing, influenced by geopolitical changes, is attracting significant foreign investment and production to India. Lastly, the ambitious $2 trillion investment in infrastructure by 2030 is underway, aimed at overhauling and expanding the nation's roads, railways, and airports. These pillars synergize to propel India towards becoming a significant global economic power. However, this growth does not come without challenges. Although India is the fastest growing country in the world, it also grapples with poverty, evidenced by a per capita GDP of 3,000. A key focus area for India must be education, as its large young workforce needs proper education and resources to avoid their potential being wasted. Additionally, India faces a delicate balancing act in its geopolitical maneuvers. It must make calculated moves to avoid antagonizing major powers like the USA or Russia, as missteps could impede its growth. Another challenge is the territorial claims from Pakistan and China, which could lead to future conflicts. For sustained growth, India needs to maintain peace and avoid wars, upholding the principle that the best way to win a war is not to fight one in the first place. In conclusion, India's ascent to a $50 trillion economy is anchored in a unique blend of demographic advantages, technological innovation, strategic manufacturing shifts, and ambitious infrastructural development. This multifaceted approach is steering the country towards remarkable economic heights, setting it on a path to potentially surpass global economic giants. Yet, the road ahead requires careful navigation of geopolitical landscapes, investment in human capital, and maintenance of regional stability. Embracing these challenges with strategic foresight will be key in India's journey in not only achieving, but also sustaining its position as a leading global economy. $50 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक इंडिया कैसे जा सकता है, इसके उन्होंने 4 स्टेप्स बताए हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जहां पूरी दुनिया रिसेशन की तरफ जा रही है, यानी कि बाकी दुनिया की इकोनॉमी खराब हो रही है, वहीं इंडिया की इकोनॉमी का रेट दुनिया में सबसे ज्यादा है, खराब होने का नहीं, बढ़ने का 7.2, जो कि IMF की और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट 2023 के मुताबिक 7.2, जो कि बहुत बड़ा नंबर है।
इससे ज़्यादा तो लोगों की इन्फ्लेशन है, या इससे कम भी आप कह सकते हैं कि काफ़ी कंट्रीज हैं उनकी इन्फ्लेशन है, लेकिन उसके बावजूद इंडिया वो वाहिद कंट्री है जो कि 7.2 स्पीड के साथ, ग्रोथ रेट के साथ अपनी इकोनॉमी को बढ़ाते चला जा रहा है, जो कि 3 पॉइंट कुछ के आसपास, अभी ट्रिलियन डॉलर के आसपास इकोनॉमी है। कमेंट में आप लोगों ने बताना कि एग्जैक्ट डॉलर जो ट्रिलियन डॉलर में कितनी बनती है इकोनॉमी अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। तो जो इन्होंने 4 स्टेप्स गिनवाए हैं उनमें है, पहला स्टेप तो यही है कि जो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान जो इंडिया की जो सबसे बड़ी पावर है वो इंडिया की यूथ है, क्योंकि इंडिया की यूथ की जो बहुत बड़ी मेजॉरिटी है वो 35 ईयर की एज से कम है, यानी कि यंग पॉपुलेशन की आबादी बहुत ज़्यादा है, 35, जिसका मतलब ये है कि लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा है। यही काम चाइना ने किया है, चाइना के पास भी लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा है। चाइना एक टाइम पे इंडिया से भी ज़्यादा पॉपुलेशन थी, अब वो टाइम आ चुका है कि भारत की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा हो चुकी है। और चाइना वाले केस में जो ज़्यादातर आबादी थी वो यंग वाली आबादी कैटेगरी में नहीं है, मीडियम वाली कैटेगरी में आती है। अब इंडिया के केस में इंडिया की आबादी चाइना से भी ज़्यादा हो गई है और वो है भी यंग, तो अब वो चाइना से भी ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चाइना ने बहुत इससे फ़ायदा उठाया, जो दुनिया की बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी वो चाइना में आके उन्होंने काम किया है, उसमें चाइना को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। वो चाइना के जीडीपी में सारा कुछ काउंट हुआ है और इससे चाइना ने कमाया भी बहुत ज़्यादा, तो जिसकी वजह से अब जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो चाइना में थी। अब यहाँ मेन बात यह है कि इस पे वापस दोबारा आते हैं कि चाइना में थी, अब इससे आगे क्या होने जा रहा है, वो जब शिफ्ट वाले पे आएंगे तो फिर बात करेंगे। दूसरे नंबर पे ये बात है कि जो यूपीआई वाला जो मामला है ये कैसे इंडिया इंटरनेशनली लेके जा रहा है, जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, जो ये लोग स्कैन करते हैं ना, क्यूआर कोड और आगे पेमेंट कर देते हैं, तो इसको ये पूरी दुनिया में आगे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि हम किस तरह अपनी पेटीएम एक पेटीएम है ना, एक फिर इस तरह यूपीआई भी है। तो यूपीआई जो है वो इंडिया का अपना इंडिजिनस खुद का बनाया हुआ सिस्टम है कि जो कि बाकी दुनिया में भी वो इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, क्योंकि इंडिया में वो बड़ा सक्सेसफुल रहा है और उससे बहुत सारे कंट्री इंस्पायर्ड है और वो चाह रहे हैं कि किसी तरह हम भी ये सिस्टम लेके आए। तो भारत ने कहा कि ये सिस्टम हमारा बना बनाया, हम आपको दे देते हैं, तो जाहिर उससे भारत को फायदा भी होगा। तो 50 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी पे जाने के लिए भारत को ये बहुत बड़ा सपोर्ट करेगा, जैसे कि यूथ भी बहुत बड़ा सपोर्ट करेगी, जैसे चाइना के केस में भी किया, अब यूपीआई वाले मामले में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी, क्योंकि ये अब इतने कंट्रीज में जा रहा है, जैसे उन्होंने 3-4 कंट्रीज गिनवाए, श्रीलंका है उसमें, यूएई है, फ्रांस भी इसके लिए बड़ा करने को है, और भी 2-4 कंट्रीज, हाँ इटली वगैरह भी है। तो यूपीआई जब इस तरह कंट्रीज में जाएगा तो जाहिर है उसका बेनिफिट इंडिया को होगा, इंडिया वहाँ से भी कमाएगा अपने एक बनाए हुए सिस्टम से। अब जो बात तीसरे नंबर पे जो उन्होंने गिनवाई है कि जो शिफ्ट वाली है, अब उसी बात पे आते हैं कि जो बड़ी पॉपुलेशन चाइना की थी वही बड़ी पॉपुलेशन उससे ज़्यादा भारत की हो चुकी है, इंडिया की हो चुकी है, लेकिन जो चाइना के पास पॉपुलेशन थी वो यंग की ज़्यादा नहीं थी, इंडिया के पास अब यंग वाली ज़्यादा है। अब यहाँ पे पॉपुलेशन तो है, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि इंडिया की दूसरे तीसरे नंबर पे पॉपुलेशन थी पहले, लेकिन क्या था कि सारी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में जा रही थी, सारी मैन्युफैक्चरिंग हो ही वहाँ पे रही थी, तो उससे फ़ायदा सारा चाइना ले रहा था। अब जो इंडिया ने पॉलिसीज चेंज की हैं उससे फ़र्क ये पड़ा है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया में भी बड़ी स्पीड से आ रही है। वो कंट्रीज़ जो कि इंडिया जो चाइना के पंगों से परेशान है, या उससे उनको लग रहा है कि फ्यूचर में हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो ख़राब हो सकती है, या हमें एक चाइना प्लस पॉलिसी अपनानी चाहिए, +1 पॉलिसी अपनानी चाहिए कि चाइना सिर्फ नहीं बल्कि हमें +1 उसके साथ एक और ऐड करें, अगर चाइना नहीं तो भारत, और अगर सिर्फ चाइना नहीं तो भारत भी साथ में क्यों नहीं, कि हमारा प्लांट यहाँ पे भी हो वहाँ पे भी हो, ताकि हमारी कंपनी जो है कल को अगर चाइना को पंगा लेता है ताइवान के साथ या अमेरिका के साथ, किसी के साथ भी कोई इशू आता है इसका, तो जो कंपनीज हैं वो उनका नुकसान ना हो। तो अब वहाँ पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, आवाम भी ज़्यादा है आबादी के लिहाज से, जो यंग आवाम है, तो उनको मैन पावर की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस तरह सस्ती लेबर भी वहाँ पे मिलेगी जैसे चाइना में मिली है। चाइना की तरक्की का वन ऑफ द बिगेस्ट राज में से ये भी है कि वहाँ सस्ती लेबर मिलती है, और उनमें से एक है, ये नहीं कि सिर्फ ये है, ऐसे तो और भी बहुत सारी कंट्रीज है, पाकिस्तान में भी 25 करोड़ है, तो फिर हमारे भी यहाँ पे होनी चाहिए, लेकिन और भी बहुत सारी इसके अलावा चीज़ें होती हैं। तो बाकी जो इन्होंने लास्ट वाला गिनवाया उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे $2 ट्रिलियन, अभी इंडिया की इकोनॉमी कितनी है 3.5 कुछ के आसपास ट्रिलियन डॉलर, तो उसमें 2 ट्रिलियन जो है कुछ एक स्पेसिफिक टाइम में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगेगा, जिस तरह बताया गया। हाँ, जिस तरह ये बात हुई है कि बाकी कंट्रीज की निस्बत इंडिया की जो डेवलपमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, चाहे वो सड़कों को हो, रेलवेज को हो, या एयरपोर्ट्स को हो, एयरलाइन को हो, दुनिया में सबसे ज़्यादा साल में बनाने वाला जो रिकॉर्ड है वो भी भारत के पास है। सड़क में एक दिन में सबसे ज़्यादा बनाने का रिकॉर्ड भी इंडिया के पास है। हाँ, एक दिन में सबसे बड़ी लंबी सड़क बनाने का रिकॉर्ड भी इंडिया के पास है। और इसी तरह जो बाकी सड़कों का है, मतलब ये सऊदी अरब को भी छोड़ गए। हाँ, सऊदी अरब तो कहाँ, सऊदी अरब और चाइना और सऊदी अरब और इंडिया का कंपैरिजन रोड की जो कनेक्टिविटी को बढ़ाने में नहीं है। रोड में उस तरह ये है ना कि सऊदी के अंदर अगर एक सड़क से आप सुबह गुजरे हो ना तो शाम को हो सकता है वापसी आपके आने तक बनी हो, इस तरह होता है वहाँ पे। तो मैंने कहा शायद वही सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। 40+ किलोमीटर
है एक दिन में 40 किलोमीटर यहाँ से लेके तो अंदाजा लगा ले बहुत लंबा है तकरीबन गुजरावाला। अब गुजरात से थोड़ा पीछे मतलब मुरीद के कामों के लगा लो, यहाँ जहाँ बैठे हैं यहाँ से लेके तो कितना अच्छा वाला फासला है ये एक दिन में, एक दिन में इतना लंबा जो है बनाना। मुझे ये बताओ कि जो उनके पुराने बाबे थे, वैसे ये बात शुगल में है इंडिया के, हाँ वो मर गए हैं या उनको मार दिया गया है? क्यों नहीं आप कह रहे हो ना कि वहाँ की यंग आबादी अब ज्यादा हो गई है भैया, क्योंकि वो बच्चे बड़े पैदा कर रहे हैं इस वजह से, वेले बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे हैं, बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे हैं तो जाहिर है पिछले भी उधर ही हैं, अगले भी ऐड हो रहे हैं तो पिछले फिर बड़े भी होते जा रहे हैं। अच्छा वेलकम ये कहाँ से आ गई काट रहा नहीं पूर्ण आ गया। भैया मैं कोई बात बता कि ये कितनी जो नरेंद्र मोदी है कितनी देर होगी उसको यहाँ पे आए हुए को? उसको 2014 में यानी कि उसने 10 साल हो गए, दो इकट्ठी जना की है वो हाँ पॉलिटिक्स की है, हाँ 2 इकट्ठी परिचय उनकी आई है। अच्छा तो मतलब उसने ये जितना इसी भी तरह कौन किया और हो सकता है कि आने वाले 50 साल अभी पता चल जाएगा तीसरी बार का कि जुलाई में, पता क्या चल रहा है जून में या जब जुलाई में। अगला ऑपोजिशन रहने नहीं है तो फिर वही आना है। चलो दूसरा ये बता कि जब नरेंद्र मोदी यहाँ पर नहीं था उससे पहले कौन था? पहले ये कांग्रेस मनमोहन सिंह। अच्छा तो तब और अभी ये जब से नरेंद्र मोदी आए हैं उस वक्त से चीजें शुरू हुई हैं या उससे पहले भी उससे शुरू पहले उन्होंने पहले भी बुनियाद रखी है ना, जो कांग्रेस थी ना उन्होंने बुनियाद रखी तो इम्प्लीमेंट करने की बारी ये आ गई तो इन्होंने उस पे इम्प्लीमेंट भी किया, काम भी किया और जो पुरानी चीजें हैं उसको दबाया नहीं, उस पे साथ काम उसको आगे कंटिन्यू किया है। उसको ये नहीं कि दूसरों में जैसे पाकिस्तान में होता है किसी का प्रोजेक्ट किसी ने स्टार्ट किया तो अगला आगे कंटिन्यू नहीं करता कि उसकी वाह होगी। तो चाइना असल में कांग्रेस ने ये काम किया कि जो प्राइवेटाइजेशन किया ना उन्होंने, पहले गवर्नमेंट सारे रेट हर चीज़ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती थी 90 से पहले, तो उससे इंडस्ट्री ग्रो ही नहीं कर सकती। तो उनको लगा कि ये हम गलत कर रहे हैं तो उन्होंने फिर चीज़ें प्राइवेट कर दी कि मार्केट डिसाइड करे कि क्या रेट होगा, मार्केट डिसाइड करे कि किस तरफ जो है कंट्री जाएगा, लोग डिसाइड करें, ये हम अपने हाथ में ना रखें। क्योंकि अपने हाथ में रखने का मतलब ये है कि अगर हमें नहीं समझ आ रही तो पूरा कंट्री खड्डे में जाएगा और अगर हमें समझ आ रही तो पूरा कंट्री अच्छा रहेगा। तो अगर पूरा हमें समझ नहीं आ रही हो सकता, अब ये प्रैक्टिकली क्या गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी ना हर चीज़ पहले, तो यहाँ तो है मतलब मार्केट ओपन नहीं है ना। ओपन मार्केट का मतलब ये है कि मार्केट ने डिसाइड करना है, ओपन मार्केट नहीं थी, क्लोज मार्केट थी। तो क्लोज मार्केट का मतलब ये है कि कुछ स्पेसिफिक पीपल लोग इतनी बड़ी आबादी का या इतनी बड़ी मार्केट को डील करेंगे, तो ये तो चीज़ ही गलत है। तो उन्होंने क्या कहा फिर? उन्होंने इसको प्राइवेट किया था हर चीज़ को, ये मार्केट डिसाइड करेगी, मार्केट में जो चीज़ चल रही होगी उस हिसाब से वो अपने आप को फ्लक्चुएट करेगी, अपने आप को ग्रो करेगी, जो कि एक हेल्दी वे पब्लिक का प्राइवेट कंपनी का हिसाब। हाँ कि मामला को उन्होंने प्राइवेट कर दिया। तो जब उन्होंने प्राइवेट किया जाहिर है फिर बहुत बड़ा बूम आया। पब्लिक किया सॉरी पब्लिक किया, हाँ, तो बहुत बड़ा उससे फिर फ़र्क पड़ा। तो उसके फिर आके कांग्रेस ने भी बड़ा फ़ायदा किया, फिर बीजेपी ने भी आके जो ये नरेंद्र मोदी इन्होंने भी बहुत आगे काम किया। तो वो काम पीछे फिर वही है मेन रीज़न कि उन्होंने प्राइवेट जो किया था। अच्छा सारा क्रेडिट उधर भी नहीं है, हाँ, प्लस ये मिला के जैसे चाइना। एक और बात था कि जो ये क्या नाम है अभी अगर 2000 जो अभी जुलाई में है ना इलेक्शन, तो अगर चल रहे हैं अभी रिजल्ट आसपास आ जाएगा जून। ओके अगर नरेंद्र मोदी याद बताइएगा नीचे कमेंट में, अगर नरेंद्र मोदी चले जाते हैं तो फिर जो ये सिस्टम चल रहा है जो उन्होंने चलाया हुआ है, जो उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं वो वहीं पे रहेंगे या? हाँ वहीं पे रहेंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे। अगर कंटिन्यू नहीं करेंगे तो उनको दोबारा आना मुश्किल हो जाएगी, जो आ जाएंगे दोबारा, जिनके चांस तो काफ़ी कम है वैसे। लेकिन कांग्रेस अगर उनको कंटिन्यू नहीं करेगी तो बहुत पैसा लगा हुआ है, बहुत मसला बन जाएगा उनके लिए, उनकी मजबूरी है उनको कंटिन्यू करना। तो ये सिस्टम पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहा है ना? पाकिस्तान के अंदर भी है, पाकिस्तान में सिस्टम इस पाकिस्तान के अंदर सिस्टम ये है ना, अगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ है ना तो वो नेक्स्ट जो हुकूमत आती है उसमें वो पूरा करना होता है। लेकिन नाम ये है कि नाम पिछली हुकूमत का होता है कि उसने ये स्टार्ट किया है, अब स्टार्ट आप करवा के गए हो, ठीक है नहीं जिस तरह जब मैं बना लूंगा तो वहाँ पे जो एक तख्ती लगती है ना, जो फट्टी लगती है जिसको हम बोलते हैं कि एक निशान बोलना, एक नाम बोलना, वो आपका होगा। वो सही है, लेकिन ये जो सी-पैक प्रोजेक्ट था पाकिस्तान का, ये जब हुकूमत चेंज हुई थी तो उसने सब रोक दिया, नहीं रोक दिया, नहीं हुआ। सी-पैक के मामला और हैं, असल में इनका कॉन्ट्रैक्ट मुख्तलिफ है थोड़ा। वो ये होता है कि जब नई हुकूमत आती है, अब मैं आपको मिसाल के तौर पर बताता हूँ कि हुआ क्या था। हुआ ये था कि पाकिस्तान के अंदर जब सी-पैक का मतलब वो मनसूबे चल रहे थे, जो उनका एग्रीमेंट हुआ था वो 150 रुपये लीटर से हुआ था कि 150 रुपये लीटर हमें पेट्रोल मिलेगा या डीजल मिलेगा तो फिर हम करेंगे। जब हुकूमत चेंज हुई तो पेट्रोल चला गया 300 पे, तो मतलब हाफ का डिफरेंस आ गया। तो जब हाफ का डिफरेंस आ गया, जिस बंदे ने 10,000 में काम करना था उसका काम 20,000 में हो गया।
जो पेट्रोल 10,000 का लगना था वो 20,000 का हो, उसकी वजह से उन्होंने फिर उसको स्टॉप किया कि भाई हम इसको स्टॉप करेंगे क्योंकि हमें ये समझ नहीं आ रही, और आपने रेट उसको उस तरह बढ़ा दिया। फिर उसका जो भी उन्होंने सेटिंग बनाई, अब दोबारा इंटरलिंक है, IMF के साथ है, फिर वो बिल्कुल लोन भी लेना जाके, तो फिर लोन लेने के लिए शराइत भी माननी है। तो सारी चीज़ें मिक्स है। पाकिस्तान ने बड़े बुरी तरह से अपने आप को फंसाया है। बिल्कुल। तो ये हमारा ओपिनियन था। आप लोगों ने अपना ओपिनियन कमेंट में लाफी बताने, बातों से एग्री डिसएग्री करते, कोई बात ऐड करना चाहिए नीचे कमेंट्स में आप हमें बता सकते हैं। ओरिजिनल क्रिएटर को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं, लिंक इनका डिस्क्रिप्शन में है, मिलेंगे फिर हम आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।